का जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल क्लाउड वर्कस्पेस के बारे में कि गूगल क्लाउड वर्कस्पेस क्या होती है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है। तो गूगल क्लाउड वर्कस्पेस क्या होती है? वर्कस्पेस मैनेजमेंट इन द क्लाउड सेल एडिटर। ठीक है, ऑन दिस पेज क्रिएट अ न्यू वर्कस्पेस, create a new workspace, open a workspace, open a home workspace, save a workspace, close a workspace, configure settings। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं गूगल वर्कस्पेस के बारे में। ठीक है, क्रिएट अ न्यू वर्कस्पेस, ओपन अ वर्कस्पेस, ओपन अ होम वर्कस्पेस, सेव अ वर्कस्पेस, क्लोज अ वर्कस्पेस। ठीक है, द क्लाउड शेल एडिटर लेट्स यू मैनेज योर प्रोजेक्ट एज वर्कस्पेस। ये जो है आपका मैनेज करेगा प्रोजेक्ट वर्कस्पेस में। अ वर्कस्पेस यूजली रिप्रेजेंट द रूट फोल्डर योर प्रोजेक्ट and include your project specific configure files। ये files are home workspace based on your home directly is created for you automatically। With workspace you can specify present setting, run and debug configuration and UI state like open file for all folder in your workspace। This page explains how to create, open, save and close a workspace and configure cloud shell editor and workspace settings। क्रिएट आ न्यू वर्कस्पेस कि हम कैसे एक नया वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट अ न्यू वर्कस्पेस यूजिंग द क्लाउड शेल टर्मिनल, क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी टू यूज योर वर्कस्पेस। ठीक है, after your dictionary is ready, you open it as a new workspace by clicking file, open workspace or open a workspace। You can open a workspace in one of the following ways: click file, open workspace। If no workspace are open, click the open workspace button in the cloud shell editor, explore overview। ये देखें। ठीक है, select the recently opened workspace from the recent section in the welcome to cloud shell window। ठीक है, ये आप देख लें। ठीक है।